In today's episode, what we want to discuss is about meditation. So, what we have done in our past episode is talk about self awareness. If you have not heard of it, if you have not heard that podcast, we would Recommend encourage. recommend you to listen to that first. It's a prequel. It's a prequel to this episode. So yeah, coming back. So today's episode is going to be about meditation, why we should do that, what is meditation, and how can we do it. So this is what it is going to be about. You've been meditating for now how many years? I think I really started during long COVID, and so it would be 2020. Yeah, that was the first time I meditated properly. Okay. And I think it's been what, 3-4 years now? Hmm. So tell me, how has meditation changed and what kind of meditation you do? I think let's start with what has it changed Changed over the years, you mean, in you? in me because of meditation. Yes. I think the result of practicing meditation is that you become mindful. And I know we have not really talked and deciphered mindfulness yet, but it's a state. It's a state of your being, I would say. So that is the change, and I wouldn't say change because I mean it's like, how do I put it? It changes you. First of all, if you start meditating, you will definitely notice changes. You will notice changes as soon as 1 week to 10 days. But then it's a practice. Like doctor के काम को practice इसलिए कहते हैं because nobody's perfect in it. Correct. And I think if you are perfect in meditation, you will be meditative all your waking hours. So that's the intention. That's how you want to live. So what are the So ways to become self-aware? So I'll tell you. So meditation का ऐसा branding हुआ है, ठीक है, कि a person who has not been meditating or who does not know meditation, they always think कि meditation इसलिए किया जाता है कि मतलब ऐसे stress कम करने के लिए, ठीक है. तो one of the most popular reasons I would say is to reduce stress. राइट. तो लोगों को अगर गुस्सा आता है तो लोग बोलते हैं मेडिटेट करो, या स्ट्रेस है या एंजाइटी है तो लोग बोलते हैं मेडिटेट करो. तो मेडिटेशन को एक दवाई की तरह दी जाती है कि तुम्हें कोई मतलब बिहेवियरल चेंज लाना है, तुम्हारा कोई ऐसा बिहेवियरल फ्लॉ है, गुस्सा, तो तुम मेडिटेशन करो, तुमको शांत करेगा. दिस इज द लाइक इमेज, दिस इज वन ऑफ द इमेजेस, है ना. तो मैंने भी वैसे ही शुरू किया था. और एक मतलब मैंने एप्स देखी, ठीक है. अब वो एप्स में क्या होता था कि अलग अलग टाइप के मेडिटेशन होते थे. कौन कौन सा अलग? गाइडेड एक तो मेडिटेशन. गाइडेड अनगाइडेड होता है. हाँ, तो गाइडेड मेडिटेशन में क्या होता है कि वो मतलब उसमें अलग अलग टेक्निक्स यूज करी जाती हैं, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, या they tell you what to do all They throughout. tell you what to think. Yeah. हाँ, they tell you what to observe. They kind of also in visualization what they do is, like I'll give you one example कि अगर स्ट्रेस रिलीव करना तुम्हारा गोल है तो उसके लिए विजुअलाइजेशन, एक मेडिटेशन जो मैंने एक ऐप में देखा था वो था कि इमेजिन दैट देयर इज अ बलून ओवर योर हेड एंड तुम उसमें नहीं, नॉट हेड, you're blowing into one balloon, or while you are blowing air into that, you are like think about the stressful thought that is basically making you bringing you negative emotions. Think about that and think that while exhaling you're putting all your stressful thoughts into that balloon. And then once you've like now imagine that you have like the balloon is inflated with all your stress and air and everything. Now imagine that you have released it and now it is going away, and it helps you imagine that it is going far away from you. So these are visualization techniques that people apply for guided meditation sometimes to relieve stress and all that. तो ये एक
टाइप ऑफ मेडिटेशन दिखाते हैं, क्योंकि उससे मे बी शायद इंस्टेंट रिलीफ मिलती है। और यही सबसे मेडिटेशन का एक ये ब्रांडिंग हो गया है कि तुमको स्ट्रेस है तो तुम मेडिटेट करो, तुमको गुस्सा आता है तो तुम मेडिटेट करो, तुमको नींद नहीं आती तो तुम स्लीप मेडिटेशन करो, है ना। सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। और फिर उसमें क्या होता है कि वाइल इट माइट बी गुड फॉर यू, इट्स लाइक एलोपैथी मेडिसिन, कि वो जब तक तुम वो सुनोगे तब तक ही तुमको हेल्प करता है, ठीक है। उसके मतलब मे बी आधे घंटे तक मैक्स तुम्हें वो इफेक्ट, शांत वाला इफेक्ट लगेगा, बट इट डज नॉट मेक यू इंडिपेंडेंट। इट डज नॉट इट इट्स लाइक तुम मेडिसिन खाओ, तुम वो सुनो तो तुमको एक इफेक्ट मिलेगा, वो शॉर्ट टर्म होगा, वो टेम्परेरी होगा, ठीक है। That's the business model of all these apps now. There are so many meditation, Yes. and you pay for another kind of variety, another kind of meditation, sleep meditation, walking, traveling meditation. That's how the business model is. Yeah. Yeah, so this is the branding. But when you told me about mindfulness meditation, so that is a total that changed my perspective of meditation. तो दूसरा एक और ब्रांडिंग ये होता है कि भाई ये साधु लोग ही करते हैं मेडिटेशन, वो मतलब ऐसे ध्यान, लंबे लंबे ध्यान में बैठे हुए हैं। तुम्हें वो मेडिटेशन क्या बोलते हैं, वो 2 हफ्ते के लिए तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, रिट्रीट। तो वहां पे मतलब तुम वहां से अचानक से क्लेंज होके आ जाओगे, ठीक है। फिर ऐसा तो ये अलग बिजनेस चल रहा है कि भाई तुम लंबा लंबा करो, है ना, तो तुम बहुत शांत हो जाओगे। बट अगेन, if any practice or any technique or any method is making you dependent on that, कि तुम वो आधे घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए करो, वो समय के लिए तुम अच्छे रहोगे, और मे बी थोड़ा और लास्टिंग इफेक्ट रहेगा, मे बी और 1 महीना रहेगा, अगर तुमने 1 महीना किया है तो वो रहेगा। लेकिन अगर तुम उसको इस तरीके से देखते हो तो इट इज़ वेरी टेम्पररी, एंड that is why I think maybe sometimes people lose trust on meditation. उनको लगता है कि हाँ कुछ एलोपैथी मेडिसिन की तरह खा लेता है। लूज स्ट्रेस और मेडिटेशन आई थिंक बहुत दूर की बात है। जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है और पीपल अराउंड मी, इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी बोरिंग एक्टिविटी। इट सीम्स ऑन द surface इट्स अ वेरी बोरिंग एक्टिविटी, you have to do it alone. It does not involve moving or talking or consuming, so it really goes against a lot of things that you do on a daily basis, that what you're used to. So बहुत सारा रेजिस्टेंस आता है, लोगों में कि आप बैठे हैं, अब इमीडिएट रिजल्ट तो मिलता नहीं है, 10 मिनट पोस्ट डिलीवरी तो है नहीं, 10 मिनट में रिजल्ट नहीं आता, then they become discouraged and then they finally conclude meditation is not for me. तो हाँ, ये भी एक ये मेरे साथ शुरू में हुआ था जब मैं एप्स वगैरह पे थी, तो तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था, लाइक That's the reason drop-offs are very high in this kind of apps. हाँ। So now my like when I came across mindfulness meditation, so the new perspective that I got is meditation is something, as you said, it should be practiced every day, and as you always say कि it's like a gym for your mind. तो जैसे हम लोग अपने फिजिकल मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, तो वैसे ही माइंडफुलनेस मेडिटेशन में हम अटेंशन वाली जो हमारी इमेजिन की ब्रेन की मसल है, तो हम उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। So how you've meditated for so long, so how has this attention muscle strengthening you've noticed? First of all, how did you notice this, and then how it has helped you? I think that would be clear by what I'm going to read today. So, what I'm going to read today talks about a specific meditation which was developed in India, Okay. which is called Vipassana. And so, the topic is Vipassana, the 3 steps to witnessing. Okay. And वही है, मतलब as you practice it, you will notice progressing from one step to another, and you will notice the changes. And then the final step, the 4th step, happens to you. You don't have to do anything. So I think it will be much clear by the reading today. Okay, let's start. Okay. So the author says there are hundreds of
methods of meditation. As we discussed, meditation has been a very long practice. 100 साल के ऊपर से लोग करते आ रहे हैं, so obviously इसके variations है, और इसके variations इंडिया में ही काफ़ी variations है, और बाहर भी अलग टाइप के meditations है. मतलब जापान में अलग टाइप का meditation है, श्रीलंका में अलग टाइप का meditation है, तो उसकी variety काफ़ी है. But perhaps Vipassana has a unique status. Just the same way as there have been thousands of mystics, but Buddha has a uniqueness of his own. Okay, now the very word Vipassana is from Pali, the language in which Buddha spoke. He was perfectly acquainted with Sanskrit. As a prince, he was well educated in the highest literature of those days. But when he started speaking, he never used Sanskrit because Sanskrit was the language of intellectuals, of the Brahmins, of priests, and not for the people. So you see, I mean, what I infer from this specific usage of language is that this thing, this meditation, the technique is for everybody, it's for the masses. It's not reserved for a particular section of religious people, and it's not reserved for anybody else. So anybody specific. So it's for everybody. Okay. Then the author continues to say, Pali is a language of the simple, in a way innocent and ignorant people. And this is where I want to make this point. This is where meditation connects with the last topic of self-awareness. See, everybody is born ignorant. You can say that. And as we move, as our years progress, you will notice that if you are not aware about yourself, you will either try to look externally on defining who you are. So that is where I think it really connects, that meditation, how it connects to self-awareness. Meditation is a tool for self-awareness. Yes. You can either go and ask somebody that who am I? You can either pay to psychologists to understand who you are. You can either ask for elders who you are. You can either ask the marketing people of the society who you are. But I think meditation is the most cheapest and the most effective way to just witness yourself, and that's how you become self-aware. And the more self-aware, let me add another advantage also. The more self-aware you are, the more aligned you will be on what you want in life. Correct. Because at one fine day of your life, you will realize that a lot of your frustrations happen because somebody else told you that do this and you'll be happy, and then you did that, and then you figured out ki nahi, this is not what I want. So that's why again self-awareness is important. Meditation is a tool for self-awareness. So Pali is the language of the simple, of the innocent and ignorant people. Vipassana is their word. In Sanskrit, it has a parallel which the public has changed according to their convenience. In Sanskrit, it is Vipassana. That is a little difficult. But in Pali, it is simply Vipassana. The meaning is the same. The literal meaning of the word is to look. The metaphorical meaning is to watch, to witness. To watch. To watch yourself. एंड तो जो भी ये लोग मार्केट करते हैं, ये सब इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर एबल टू वॉच योर सेल्फ, सो यू विल ऑलवेज सी कि अच्छा ये मेरे ट्रिगर पॉइंट्स हैं. तो तुम्हें ये भी दिखेगा कि ओके अब मेरा इमोशनल स्टेट चेंज हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है. तो जब तुम्हें वो गुस्सा आता हुआ दिखेगा तो फिर यू विल बी लाइक, देन यू कैन टेक डिसीजन. If you know that. हाँ, तो ये जो मार्केटिंग की जाती है वो इन इफेक्ट्स के ऊपर की जाती है. मार्केट में हमेशा रिजल्ट बेस्ड दिया ना तुमने. हाँ, तो वो रिजल्ट के ऊपर होता है कि भाई तुमको ये मिल जाएगा. बट द कोर ऑफ इट इज टू वॉच योरसेल्फ, टू वॉच व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर फीलिंग, व्हाट यू आर स्पीकिंग, व्हाट यू आर डूइंग. तो कहीं पे भी मतलब आई थिंक दैट हेल्प्स इवेंचुअली इन लाइफ. एंड इफ यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ इट हियर, मेडिटेशन करने, जब तुम फॉर्मल मेडिटेशन करने बैठे तुम्हारी आंख बंद होती है.
And what the real meaning is to watch. So basically, you're watching while your eyes are closed. Yeah. That's why all this spirituality and all this stuff has some poetic element to it. There are a lot of poets who are very spiritual. Kabir was a poet who was very spiritual. So all these mystics, Sufis also. Okay, continuing. Author says Gautam Buddha has chosen a meditation which can be called the essential meditation. All other meditations are different form of witnessing. Witnessing is present in every kind of meditation as an essential part. It cannot be avoided. Buddha has deleted everything else and kept only the essential part to witness. Okay. This is very interesting also because I've heard of people going into very fancy courses and I will name them. My mom did go to Art of Living. They have a specific form of meditation. Yes. They have a specific technique of meditation, whatever it might be. Without my mom, they never really understood or questioned, or nobody questioned that why are you saying a particular word while inhaling? Why are you saying a particular word while exhalation? Yes. And what is the technique all about? What am I learning? Yes, that's true. Even I went to Art of Living. And उस समय बहुत उसको वैसा मैजिक की तरह बताया जाता है कि there's some magic happening. तुम सोहम बोलो और फिर सोहम को अलग रिदम्स में बोलो तो फिर ऐसा होगा. You'll feel and you actually feel. So what happens is it's just breathing. Different rhythms of breathing for certain period of time. And उसके बेसिस पे things happen, like you feel things. And वो क्या करते हैं again, they want you to come back. They want you to come back and do the same thing again. So they don't tell you कि तुम कैसे independently ये चीज कर सकते हो. Because फिर धंधा रुक जाएगा ना. हाँ. So that's a business that मतलब कि तुम हमारे पास आओ, हम तुमको बस उसका इतना पार्ट बताएंगे कि तुम हम पे डिपेंडेंट हो जाओ. And you don't get to understand the core of it. And that's true. What you said is true. And I think what we are trying to do here is to find out the simplest technique to be independent to do this meditation. Right, and then whatever you talk about, we don't want to suspend critical thinking. Yes. I understand that we're talking about matters of spirituality and something on those lines, but then does not mean that you suspend your critical thinking. You suspend your power of reasoning. That's the reason you have been given your brains. Yes. So yeah. Continuing, author says that there are 3 steps of witnessing. Buddha is a very scientific thinker. He begins with the body because that is the easiest to witness. It is easy to witness my hand moving, my hand being raised. I can witness myself walking on the road. I can witness each step as I walk. When was the last time you noticed walking? Today morning. How? Because I had just done meditation. And after meditation, बहुत समय के लिए I like it does have calming effect. So you see your thoughts coming, and so whatever you are doing, basically the whole environment kind of becomes slow because inside you feel that you have slowed down. You've slowed down. So मैं अभी किचन तक जा रही थी तो I literally felt the surface, the style touching, like the texture. वो ठंडा लग रहा है पैर में while I'm walking. I could feel that while I was walking. तो even like एक 4 step of walking में मैंने वो सेंस किया कि मैंने चप्पल नहीं पहना है. मैंने चप्पल नहीं पहना, मुझे ठंडा लग रहा है. ये अभी सफाई हुई थी तो कितना टाइल साफ है. ये सब कुछ मैं नोट करके गई केवल 4-5 कदमों में. सो दैट इज अ इफेक्ट. दैट इज व्हाट आई थिंक माइंडफुलनेस इज कि तुम जो भी कर रहे हो उसमें बहुत
वो कितना भी बोरिंग लग सकता है, वो बोरिंग इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग डिटेल्स मिस आउट कर देते हैं, इसलिए वो बोरिंग लगता है। लेकिन जब तुम इसमें इमर्स्ड हो कोई भी सिंपल एक्टिविटी में भी, तो तुमको वो भी बहुत ऐसा लगता है, ओ वाह ये क्या है। सो आई थिंक दैट मेडिटेशन brings that wonder element in mundane things also. And it's very opposite of the day and age that we are living. Exactly. We are living in a day and age of multitasking. Hustle and bustle. Hustle and bustle. तो मतलब दिमाग ऑलरेडी वहां पहुंच चुका होता है कि मतलब मैं ये करने जा रहा हूँ, एंड देन बॉडी जस्ट मूव्स बिहाइंड दैट. सो वो हबड़ तबड़, इफ यू कैन कॉल इट, इन दैट रेस्टलेसनेस, यू विल, आई मीन यू कैन अचीव मल्टीपल टास्क. आज की टेक्नोलॉजी में तू ड्राइव भी कर रही है एंड देन साथ में तू अपना स्विगी भी ऑर्डर कर रही है, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट व्हाट आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट एंड इज द एंगेजमेंट इन एवरीडे लाइफ. यस. एंड हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि टू बी हैप्पी वी शुड एम्ब्रेस द लिटिल थिंग्स ऑफ लाइफ. ये सब जो पोएटिक बातें हम बोलते हैं वो करते नहीं है, वो करते नहीं है क्योंकि हम हमेशा ऐसे कि हाँ 9 बजे उठ के वहां जाना है, फिर 9:30 बजे वो करना है, फिर 10:30 बजे ये करना है, हम इसमें होते हैं. तो हम कहाँ ये एम्ब्रेस कर लिटिल थिंग्स ऑफ लाइफ. वो बस पैचेस में आता भी है. तो जब हम ट्रैवल करने गए तब हम करते हैं बस एम्ब्रेस. हम अपने रेगुलर लाइफ को एम्ब्रेस नहीं करते हैं. अगर करना है तो फिर वो हम माइंडफुल होके ही कर सकते हैं, अवेयर होके ही कर सकते हैं कि हाँ मतलब मैं अगर बर्तन मांज रही हूँ तो वाह मतलब झाग ऐसे आ रहा है, झाग नहीं आ रहा, पानी ठंडा है, पानी गर्म है. And you have to experience this to understand. Like, Yes. I know this may, I mean, it to the listener it can sound like very very frivolous. Yes. But only if you experience the quality of your life, then you might be convinced of doing it. Yeah, I think if you want an intentional, authentic, enriched life, I think meditation is the way. So continuing what the author is saying, so the first step in Vipassana is witnessing the actions of the body, which is the simplest. Any scientific method would always begin from the simplest. While witnessing the body, you will be amazed at the new experiences. When you move your hand with witnessing, watchfulness, alertness, consciousness, you will feel a certain grace and a certain silence in the hand. You can do the movement without witnessing. It will be quicker, but it will lose the grace. और यहाँ पे ही अगर if you read any books about postures, you will actually you will be able to connect the dots. In the sense, because you have started meditating, you have started noticing your own postures, you will also notice your postures in different settings. While like gym and Yeah. Correct. Buddha used to walk so slowly that many times he was asked why he was walking slowly. He said, "This is a part of my meditation. Always to walk as if you are walking in winter into a cold stream." My God. Slowly, alert, because the stream is very cold. Aware, because the current is very strong. Witnessing each of your steps, because you can slip on the stones in the stream. It's a very cool metaphor to keep in mind. walking meditation. How to walk like. The method remains the same, only the object changes with each step. Now we started with the first step, which was the body. Now we are going to the second step. The second step is watching the mind. Now you move into a subtler world, watching your thoughts. If you have been successful in watching your body, there is not going to be any difficulty. Thoughts are just subtle waves, electronic waves, radio waves, but they are as material as your body. They are not visible, just as air is not visible. But air is as material as stones. So are your thoughts material, but invisible.
That is the second step, the middle step. You are moving towards invisibility, but still it is material, watching your thoughts. The only condition is don't judge. Don't judge, because the moment you start judging, you will forget watching. Yes, that's true. अगर कोई फोटोग्राफी करता है तो अगर उसको कोई सीन कैप्चर करना है, कोई फ्रेम कैप्चर करना है, तो वो अगर खुद उस ब्यूटी को एंजॉय करने में लग जाता है ना, तो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ जजमेंट, इट्स अ पॉजिटिव जजमेंट, बट बेसिकली यू आर सेइंग कि वाओ ये कितना सुंदर है, वाओ ये ऐसा है. तो इफ यू गेट बिजी इन दैट, देन यू हैव स्टॉप्ड watching what's there in a frame. You'll stop observing. So photography is just an act of observing. You observe something and then you click, right? तो अगर कोई फोटोग्राफी करता है वो ये चीज समझ सकता है कि ऑब्जर्वेशन में तुम्हारा माइंड बीच में नहीं आ सकता है. जैसे ही तुम्हारा माइंड बीच में आया, और माइंड बीच में आना मतलब थॉट्स कि ओ वाओ ये इतना ठंडा है, इतना गर्म है, इतना सुंदर है, इतना ऑरेंज है, इतना जज करना. तो as soon as the judgment comes in, observation has stopped, because now you're engaged with your mind. You're not engaged with what you're seeing or what you're observing. I think that's why I think कभी photography को भी meditative बोला जाता है. Everything becomes meditative. We have spoken on this before. Meditation is not just those 10 minutes. Correct. If you continue meditating, you will observe that all your day-to-day life, all your waking hours gets impacted in some way. But on the same lines, like if you generalize it, aren't as human beings, aren't we always judging? Aren't we always avoiding pain and repeating pleasure? Yeah, that's true, because हमारा माइंड का मेन ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी गोल इज सर्वाइवल. ठीक है, और ओपिनियंस फॉर्म करना, दैट हेल्प्स द माइंड. मतलब अगर मैं ड्राइव कर रही हूँ एक सड़क पे, मैंने आज देखा कि वो सड़क पे ये मतलब कहीं खुदा हुआ है या कुछ है, तो मेरा माइंड जज करेगा कि ये तो घटिया सड़क है. ठीक है, उसको स्टोर करेगा, और फिर जब मैं वापस उस रास्ते पे जाऊंगी तो मुझे बोलेगा बेटा इधर मत जा, कोई और सड़क देख अगर जा सकते हैं. सो इट्स हेल्पिंग यू सर्वाइव. तो सर्वाइवल का दूसरा अगर तुम तरीके से देखो तो बेसिकली टू ईज योर लाइफ, है ना, कि कितना इजी तुम अपना लाइफ कर सकते हो. तो वही माइंड का पर्पस है, माइंड का मेन पर्पस वही रहा है, मतलब राइट. तो इसीलिए हम लोग जजमेंट, ओपिनियन ये सब फॉर्म करते हैं और उसको स्टोर करते हैं, और फिर वो वापस से रिवोक करते हैं जब सिमिलर स्टिमुलाई मिलता है उनको. तो यस, दैट्स ट्रू. बट मेडिटेशन क्या करेगा, एंड हम ये किस तरीके से नहीं बोल रहे कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए. ठीक है, because it is helpful. Don't be stupid. It is helpful. That's why we've been doing it by default. लेकिन माइंडफुलनेस क्या करता है, एक तुमको पॉइंट देता है कि तुम हमने इस बारे में बात करी थी कि रिएक्ट ना करो, डिफॉल्ट पे मत चलो. हाँ, तुमने ओपिनियन स्टोर किया था, अब वो ओपिनियन तुम्हारे दिमाग में आया है, यू वॉच दैट ओपिनियन एंड देन टेक a response on the basis of that. You use that opinion, but not by default. क्योंकि default कभी कभी गलत चीजें भी करवा देते हैं, right? So that is the help that meditation brings in. Right. So continuing the reading, the author says there is no antagonism against judging. He has nothing against judging. The reason it is prohibited is that the moment you start judging, this is a good thought. For that much space you were not witnessing. You started thinking. You became involved. You couldn't remain aloof, standing by the side of the road and just seeing the traffic. So यहाँ वो witnessing वाली बात आ जाती है, because अगर कोई painful thought आता है तो भी हम engage करते हैं कि इसको कैसे avoid करेंगे, या फिर कोई अच्छा थॉट आता है तो हम उसमें एंगेज कर जाते हैं कि ओह वाओ इट वाज सो प्लेजेंट एंड व्हाट वर द डिटेल्स, एंड वी स्टार्ट वो गाय जैसे चबाती है, उसको क्या बोलते हैं,
वो करने लगते हैं. So yeah, don't become a participant either by appraising, valuing, condemning. No attitude should be taken about what is passing in your mind. You should watch your thoughts as if clouds are passing in the sky. Don't make judgments about them. This is a black cloud, it's very evil, and the white cloud looks like a sage. Clouds are clouds, they are neither evil nor good. So are thoughts, just a small wavelength passing through your mind. Watch without any judgment, and you are again in for a great surprise. As your watching becomes settled, thoughts will come fewer and fewer. This is a very cool thing and it happens. I understand. जब पहली बार कोई भी जिसने मेडिटेशन नहीं किया होता, इनफैक्ट तुम मेडिटेशन करना थोड़ा टाइम छोड़ दोगे ना थोड़े दिनों के लिए, तो अगेन जब तुम बैठोगे you will be consumed in thoughts. Yes. But if you continue meditating, you will notice spaces in between. Yes. The proportion is exactly the same. If you are 50% settled in your witnessing, then 50% of your thoughts will disappear. If you are 60% settled in your witnessing, then only 40% of thoughts will be there. When you are 99% a pure witness, only once in a while there will be a lonely thought, 1% passing on the road. Otherwise, the traffic is gone. That rush hour traffic is no longer there. So where do you think you are? सो एज यू सेड, मैंने शुरू किया था लास्ट ईयर, मैंने प्रॉपरली शुरू किया था माइंडफुलनेस मेडिटेशन. काफ़ी महीने मैंने किया कॉन्स्टेंटली. तो जैसे तुमने बोला, शुरू शुरू में इट्स वेरी डिफिकल्ट. 10 मिनट के लिए भी बैठना बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है. रेस्टलेसनेस आती है बहुत. हाँ, बहुत रेस्टलेसनेस आते हैं और बहुत थॉट्स आते हैं बहुत ज़्यादा. तो ऐसा होता था कि मैं बीच में ही आँख खोल देती थी. तो क्योंकि इतना वो होता था कि अपने आप ही आँख खुल जाती थी कि नहीं, खोलो आँख, ऐसा होता था. फिर धीरे धीरे मैंने नोट किया कि मुझे पता चलने लगा कि मैं थॉट में कंज्यूम हो रही हूँ या इंटरेक्ट कर रही हूँ अपने थॉट के साथ में. फिर ये चीज़ें मुझे दिखना शुरू हुआ. तो फिर मैं अपने आप को वहाँ से वापस अपने ब्रेथ पे लेकर आती थी. फिर ये चीज़ कम होने लगी. फिर ईजियर होने लगा मेडिटेशन में लंबा बैठना, क्योंकि वो ओवरवेलमिंग नहीं होता था या इतना थॉट्स एकदम ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं. और थॉट्स जब आते तो ऐसा होता है कि एक आया थॉट रैंडम. मैंने ये भी नोट किया है कि थॉट्स आते कैसे हैं. तो ऐसे रैंडम आएगा एक, ठीक है, ऐसे पप करके एक आया. फिर मैं उसे कंज्यूम हो गई. मतलब मैं देखा कि वो, हाँ, फिर उसने एक इमोशन किया. वो इमोशन से और एक थॉट आया. फिर वो ऐसे चेन ऑफ थॉट्स आता है. और फिर अचानक से वो चेन होते होते कनेक्ट होते होते वो एकदम ही अलग डायरेक्शन में चला जाएगा. मतलब इट्स लाइक चेन, इट्स लाइक वो रिवर्स की ट्रिब्यूटरी मैप होती है ना, वो जैसे ट्रिब्यूटरीज निकल के फिर आती है, फिर घुस जाती हैं, फिर मर्ज हो जाती है, फिर डाइवर्ट हो जाती है. तो उस टाइप का थॉट चेन चलता है. और वो अगर आप जितना कंज्यूम रहोगे उस थॉट में, उस सीरीज ऑफ थॉट में, तो उतना ही वो चलता ही रहेगा. ऐसा होता है. तो यू कैन सी दिस हैपनिंग कि एक ऐसा थॉट आ रहा है, वो तुम्हारे अंदर इमोशन लेकर आ रहा है, फिर वो कोई इमेज लेकर आ रहा है. ये सब कुछ होता है जब तुम्हारा थॉट चल रहा होता है. एंड यू कैन ओनली नोटिस दिस व्हेन यू आर मेडिटेटिंग. और फिर अगर तुम रोज करो मेडिटेशन, तो ये चीज तुम अपने डे टू डे लाइफ में भी देखना शुरू कर देते हो. कि मैं मीटिंग में गई, मीटिंग के पहले मेरे दिमाग में ये थॉट था या उससे मेरे को ये फीलिंग आई. फिर मैं मीटिंग में गई, फिर ऐसा मीटिंग में होता रहा. तो ये चीजें दिखना, जैसे हम मेडिटेशन में आंख बंद करके देखते हैं, वो आंखें खुले में भी दिखना शुरू हो जाती हैं. और जो बहुत ही एक्सपर्ट है वो आई थिंक आई एम इमेजिनिंग कि ऐसे मोमेंट टू मोमेंट बेसिस पे सब कुछ देख सकता है. दे आर मोर कंपैरेटिवली स्लोअर एंड दैट. That's where I mean you can find peace only there, because even if you are sitting doing nothing and in your head you are all over the place, you cannot be peaceful. Okay. So the author says, when you are 100% non-judgmental, just a witness, it means you have become just a mirror, because a mirror never makes any judgments.
An ugly woman looks into it, the mirror has no judgment. The a beautiful woman looks into the mirror, it makes no difference. Nobody looks into it, the mirror is as pure as when somebody is being reflected in it. Neither reflection stirs it, nor no reflection. Witnessing becomes a mirror. Wow. और यहाँ पे मैं एक स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा एक कंटेंट रिलेटेड बिकॉज व्हाई नॉट. तो अगर आपने एक मूवी देखी हो जिसका नाम है दिल्ली 6. नहीं देखी. हाँ, तो कंटेंट रिकमेंडेशन and meditation and this podcast does not have to be always boring. So go and watch Hey, it's Delhi. not boring. Let our listeners decide that. So if you check out movie Delhi 6, there is a very important role of a mirror, and that's what I think is what the director or whoever is trying to say this the exact same thing. Wow. This is a great achievement in meditation. You have moved halfway, and this was the hardest part. It is because जैसे मैंने बोला अगर तुम नहीं करोगे तो तुम वापस पीछे आ रहे हो तो you have to continuously do it for a long period of time, daily, consistently. So actually you notice the difference. Now you know the secret, and the same secret just has to be applied to different objects. From thoughts, you have to move to more subtle experiences, emotions, feelings, moods, from the mind to the heart, with the same condition, no judgment, just witnessing. Right now, when you are feeling sad, you become really sad. You are possessed by sadness. When you are feeling angry, it is not something partial. You become full of anger. Every fiber in your being is throbbing with anger. This is how जो हमने पहले बोला था जो promises की जाती है तो गुस्सा आते मेडिटेट करो स्ट्रेस हो ये is the exact thing which helps you because once you start witnessing and you can see the anger rising then you have a choice. Correct. Watching the heart, the experience will be that now nothing possesses you. Sadness comes and goes. You don't become sad. Happiness comes and goes. You don't become happy either. This is a very important thing to note because the promise, if I make the wrong promise, I don't think it's ethical. You cannot promise that ये करो तो तुम खुश हो जाओ ये है वो लेवल मतलब खुशी में भी वो समझते हैं कि this is temporary and sadness में भी वो समझते हैं कि this is temporary. Whatever moves in the deep layer of your heart does not affect you at all. For the first time, you taste something of mastery. You are no longer a slave to be pushed and pulled this way and that way, where any emotions, any feeling, anybody can disturb you for any trivia. I know we are short of time, but let me just quickly finish it. So, when you become a witness of the third step, you will become for the first time a master. So, what can you just recap the 3 steps? First body था, फिर फिर माइंड था. thoughts थे, Thought. हाँ, फिर emotions. Nothing disturbs you, nothing overpowers you, everything remains far away. Deep below, you are on a hilltop. These are the 3 steps of Vipassana. And now, to conclude, when you have become perfectly watchful of your body, the mind, the heart, by heart, the author is meaning the emotions, then you cannot do anything more. Then you have to wait. When perfection is complete on these 3 steps, the 4th step happens on its own accord Oh. as a reward. It is the quantum leap from the heart to the being, the very center of your existence. You cannot do it. It happens. And that's what you can call it self realization, you can call it enlightenment, you can call it ultimate liberation, nirvana,
but that is the fourth step that happens. So I hope you found this reading cool, and let us know. Thank you. I had one more. Okay. So, we understood the like why we should do meditation or what is meditation, what effects it has, right? One thing to understand is meditation is a tool. It's a tool. It's nothing but a tool, and a tool has to be used with right mindset. ऐसा मैंने कहीं तो किसी वीडियो में देखा था कि टेररिस्ट बॉम्ब करने के पहले मेडिटेट करके जाते थे. Wow. नाउ इट्स वेरी दिस थिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट कि मेडिटेशन क्या करता है. मेडिटेशन तुम्हें फोकस देता है, अवेयरनेस देता है, मतलब इट गिव्स यू अ वेरी पावरफुल टूल. नाउ इफ यू डोंट नो व्हाट टू डू विद इट, तो तुम जो भी उठाओगे, चाहे अच्छा काम चाहे बुरा काम, उसको उस फोकस और उस चीज के साथ करोगे. ठीक है. तो मेडिटेशन अगेन इज अ टूल which should come with a right mindset, and that's where philosophy helps. So that's what we're trying to do here in this podcast. So this is what I wanted to kind of underline, that it's a tool. How you use this tool depends on your mindset, what your goal is and what you want to do with this life. But yeah, okay. So now what I want to read today is about how to do meditation, a technique. Okay, so there are, as we discussed in the beginning of the podcast, lot of techniques. But we'll be focusing on mindfulness meditation, and one of the techniques, one second. So there's a book called as Book of Secrets, that's by Osho, and it discusses 112 techniques of meditation, which and we know that you're not going to read all the whole no. of the techniques. That's why we are here. That's the value that we are providing. We read the book for you. We figure it out what it means, and then we come here. Yeah. Just putting it out there. So and these 112 techniques are actually dialogues between Shiva and Shakti. So basically Shiva is telling these techniques to Shakti. Basically, for our non-Hindu listeners, they are two gods. These are The two Hindu gods. Yeah, two gods. Shiva one and male and one female. one. They are lovers, basically, husband and wife. Okay. Yeah. Okay. So between two breaths. Radiant one. This experience may dawn between two breaths. After breath comes in, and just before turning up, the beneficence. This is what Shiva has told to Shakti. Okay. After breath comes in, and just before turning out, that is the beneficence. Beneficence. The author will explain. So be aware between these 2 points and the happening. So before going into it, the context is basically in meditation, what we do is we sit down in the mountain pose. Basically बुद्धा जैसे कि अगर तुमने देखी होगी कि वो कैसे बैठते हैं, with his spine straight, head straight, and legs folded, and the arms are sometimes, so it's your choice. You can either put your arms on your knees, or you can put it one above the other, both the palms near your stomach, abdomen, lower abdomen. So you can sit like that. So basically the intention is to sit straight. Spine. The spine should be straight. नहीं तो फिर you might even doze off while, because you are basically sitting with your eyes closed. Postures matter actually. If you read and go into certain depths, you will understand. Postures matter, and that's yeah.
Yeah, so the posture is important because first of all, it's a breathing exercise. Basically, you have to breathe and you have to pay attention to your breath. So the breath coming in, how it feels, the body sensations, and then when it goes out, how it feels. So you have to keep your attention on the breath. That's meditation. सो अब उसके बीच में सारे थॉट्स जो आएंगे, यू हैव टू एक्नॉलेज देम दैट यस, या दे आर देयर, बट यू डोंट हैव टू एंगेज विद देम. यू हैव टू ब्रिंग बैक योर अटेंशन टू योर ब्रेथ. मेरा एक इसमें इमेजिनेशन ऐसा है कि जो ब्रेथ है ना, उसको तुम ऐसा बीड्स की तरह यूज करते, दे आर बीड्स. ठीक है, तो ये हमारा बेसिक मेडिटेशन टेक्निक या पोज या हम क्या करते हैं मेडिटेशन में. दिस इज व्हाट इट इज. अब लेट्स कम बैक टू द रीडिंग. सो व्हेन योर ब्रेथ कम्स इन, ऑब्जर्व फॉर अ सिंगल मोमेंट or 1,000th part of a moment, there is no breathing. Before it turns up, before it turns outward. When breath comes in, then there is a certain point and breathing stops. Then the breathing goes out. When the breath goes out, then again for a single moment or a part of a moment, breathing stops. Then breathing comes in. तो basically जब हम सांस लेते हैं तो सांस लिया, इनहेल, फिर एक्सहेल किया. तो जब एक्सहेल करते हैं और एक्सहेलेशन और नेक्स्ट इनहेलेशन के बीच में एक पॉइंट होता है जहां पे देयर इज नो एयर इन द बॉडी. और एयर नहीं मतलब ऑक्सीजन नहीं है, मतलब लंग्स में नहीं है, मतलब हाँ. बायोलॉजी छोड़ भी दे, हाँ. डिटेल में नहीं जाए, बट देयर इज नथिंग. there's nothing. तो दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू फोकस ऑन, दैट ये मोमेंट पे फोकस करो. मतलब ये मोमेंट में देखो क्या होता है. इफ यू आर रियली बीइंग अवेयर ऑफ ऑल द सेंसेशंस, यू विल फोकस दिस, योर फोकस विल कम ऑन दिस. ठीक है, सो दिस इज द मोमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. बिफोर द ब्रेथ इज टर्निंग इन or turning out, there is a moment when you are not breathing. In that moment, the happening is possible because when you are not breathing, you are not in the world. Understand this. When you are not breathing, you are dead. You are still but dead. But the moment is of such a short duration that you never observe it. For Tantra, each outgoing breath is a death and each new breath is a rebirth. So short context to Tantra. तो Tantra का थोड़ा ऐसा नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट होता है, तांत्रिक ये वो तांत्रिक सेक्स. तो Tantra is just method. Tantra means method. लिटरली Literally, Tantra means method or technique. ठीक है. So breath coming in is rebirth. Breath going out is death. So what the author is trying to say is, if you notice this thing, if तुम्हें इतना शार्प अवेयरनेस रखना है अपने ब्रेथ पे कि तुम्हें ये चीज़ नोटिस होगी कि तुम्हारी बॉडी कैसे गेयर्स स्विच करती है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो टर्न होता है उसमें. और जब एक्सहेल पूरी हो जाती है एयर, तो तुम्हारी बॉडी कैसे बिहेव करती है. So another variation of this is, which I sometimes try to do, is you exhale more than what you have inhaled. तो वो इसको देखना थोड़ा ज़्यादा easy कर देता है because you are exhaling more. तो वो point तक तुम exhale करते हो जहाँ तक तुम कर सकते हो. Completely out. ठीक है, तो जब तुम वो चीज़ करते हो तो वहाँ पे you will see, you note कि तुम सांस नहीं ले पा, अब तुम्हारे उसमें सांस नहीं है बची, राइट, एवरीथिंग इज आउट. तो यू विल नोट कि तुम्हारी बॉडी इट कैन नॉट स्टे इन दैट सिचुएशन. इट rushes to get that air. So this sensation also, if you see, this means कि मतलब हम एक चीज खत्म होता है और फिर तुरंत मतलब हाँ, हम अपने बॉडी को कंफर्ट करने के लिए, हमारी बॉडी बनी है, हमारी बॉडी माइंड सब उसके ही लिए बना है कि मतलब सरवाइव करे, कंफर्ट रहे. तो वो चीज तुम नोट करोगे. तो वही वो चीज बोल रहे हैं कि दिस पॉइंट
this point between is where the rebirth happened, and like death happens, and then when you inhale again, you are rebirthing. Correct. So the outgoing breath is synonymous with death. The incoming breath is synonymous with life. So with each breath, you are dying and being reborn. That's very poetic. That's हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम कितने बार जीते और कितने बार मरते हैं. That's true. The gap between the two is of a very short duration, but keen, sincere observation and attention will make you feel the gap. If you can feel the gap, Shiva says the beneficence. I still don't understand what is beneficent. Basically, you have you have to feel the gap. Okay. ठीक है? Then nothing else is needed. You are blessed. You have known the thing has happened. You are not to train the breath. Leave it just as it is. Why such a simple technique? It looks so simple. Such a simple technique to know the truth. To know the truth means to know that which is neither born nor dies. To know that eternal element which is always. You can know the breath going out. You can know the breath coming in, but you never know the gap between the two. उसकी सेंसिटिविटी बहुत डिफिकल्ट है ऐसे नॉर्मली अचीव करना. हाँ, तो वो मेडिटेशन से आती है. और वो चीज मतलब इट विल हेल्प यू. For the longest time, we don't even realize that we are breathing. It's just automatic. Yeah. Try it. Suddenly you'll get the point, and you can get it. It is already there. Nothing is to be added to you or to your structure. It is already there. Everything is already there except a certain awareness. So how to do this? First, become aware of the breath coming in. Watch it. Forget everything. Just watch breath coming in. The very passage. Buddha tried particularly to use this method. So this method has become a Buddhist method. In Buddhist terminology, it is known as Anapanasati yoga. ये I think श्रीलंका में ये ऐसे यूज होता है ये वाला टेक्निक. Okay. And Buddha's enlightenment was based on this technique. Only this. तो इंसान इतना सेंसिटिव हो जाता है कि वो हर चीज को रियली देखता है इन जनरल इन हिज लाइफ. इतना सेंसिटिव हो जाता है. लाइक वो जो ओल्ड पाथ वाइट क्लाउड वाली जो बुक थी, उसमें मुझे याद है उसमें से लिखा था कि बुद्धा एक पत्ते को देखते थे और पत्ते को देख के उन्होंने ये इन्फर किया था कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है. देयर इज नो सेपरेट सेल्फ. और उसमें वो थॉट प्रोसेस भी लिखा है. While he was, so this is basically he was meditating on the leaf. कि लीफ ऐसा स्ट्रक्चर है, लीफ ऐसा दिखता है, ऐसा फील करता है, ये कलर है, ब्ला ब्ला ब्ला. लीफ इस ट्री से अटैच्ड है. ये लीफ कैसा पैदा होता है? ट्री से पैदा होता है. बट ये ट्री कहाँ से आता है? मतलब कहाँ से आया? रूट से आया. रूट से आया, रूट पानी लेता है, सन से आता है. तो ट्री इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकता. ट्री अपने एनवायरनमेंट की वजह से एग्जिस्ट करता है. So you are foolish if you say that I can be independent. I can survive independently. There's no separate self. Everything is interconnected. और ये उनका 3 या 4 मेजर टीचिंग में से एक है ना. 3 टीचिंग, 3rd टीचिंग है इनका. नॉट there's no self. There's no separate thing. We are all interconnected. तो this is what meditation does. इतना सेंसिटिव बनाता है वो. Buddha said, be aware of your breath as it is coming in, going out, coming in, going out. He never mentions the gap because there is no need. तो ये जो चीज़ लिखी थी गैप के बारे में, तो अगर मैं ये चीज़ बोल दूँ कि ये गैप नोटिस करना है, तो हमारा माइंड उसको गोल में कन्वर्ट कर देता है कि द गोल ऑफ द मेडिटेशन इज टू नोटिस द गैप. दैट्स नॉट द गोल. द गोल इज टू बी अवेयर, टू वॉच. अब वो जब तुम वॉच करोगे तो ऑटोमेटिकली तुमको वो गैप दिखेगा. सो दैट्स व्हाट. सो इसमें हाँ, मैं टेक्निक पहली बार सुन रहा हूँ. हाँ, पर मैं वॉच करता हूँ. ये वाला जो पार्ट होता है कि जिसमें एक्सलेशन भी नहीं, इनहेलेशन भी नहीं, मुझे पता है वो होता है. हाँ. सो दैट्स व्हाट ही इज सेइंग कि he never mentions the gap because there is no need.
Buddha thought and felt that if you become concerned with a gap, that concern may disturb your awareness. Correct. So he simply said, be aware. When the breath is going in, move with it. When the breath is going out, move with it. Do simply this. Going in, going out with the breath. That is meditation. That's it. I think that is it. There's nothing else to talk about the technique of meditation. It's just this. और ये just मैं बोल रही हूँ, बट इट्स डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है. तुम मे बी शुरू के 1-2 ब्रेथ्स तक अलर्ट रहते हो, फिर तुम्हारा माइंड इट टेक्स ओवर. फिर सब भूख लग रही है, खुजली हो रही है, दरवाजा खुल रहा है, हवा आ रही है, ठंडी लग रही है, ये सब चल जाता है. तो जैसे ही ये सब होता है तो उससे आपको वापस आना है और वापस अपने ब्रेथ पे फोकस करना है. दैट्स इट.